गौर व फिक्र करें तो वो ईमान की जो पीछे हकीकत है, भले आप ईमान के 1000 माने निकल आए, उस हकीकत तक इंसान नहीं पहुंच पाएगा। If you are to reflect upon something like iman, something like faith, something like belief, you will encounter within your own mind hundreds of different definitions of iman, hundreds of different meanings behind iman, but you will be unable to reach the reality of iman. इसी तरह अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रास्ता के बारे में बात करें तो ये रास्ता क्या हो सकता है? अगर मैंने अल्लाह का रास्ता के बारे में बात करना शुरू की, इस गुफ्तगू पे हमने शुरुआत की, तो हर इंसान जो मौजूद है अपने अपने फहम और अकल के मुताबिक अल्लाह का रास्ता का एक फहम और सोच तोड़ती जाएगी दिमाग में। If I were to speak about the path of Allah subhanahu wa ta'ala, if I were to begin a discussion on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then each person seated here would have a different understanding, a different definition of the path of Allah subhanahu wa ta'ala in his or her mind. और इस बात से ये लाजिम नहीं होता कि एक इंसान का डेफिनेशन सही है और दूसरे की तारीफ गलत, सभी नहीं है। It is not necessarily true that just because we have different definitions, that one person's definition is correct and the other person's definition is false. However, लेकिन चाहे आप लाखों तारीफ लेके आए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रास्ते का, तब ही उस रास्ते की हकीकत इंसान उस तक नहीं पहुंच पाएगा। रास्ता समझने के लिए नहीं कायम किया जाता है, रास्ता चलने के लिए कायम किया जाता है। We have hundreds of different definitions before us. If you look to your right and to your left, you'll find different definitions of the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But even if we bring all of those definitions in front of us, we will not reach the reality of that path. Because a path has not been set for us to simply understand. The path has been set for us to walk. अब जब हम इस बात पे आए कि ये रास्ता चलने के लिए कायम किया गया, तो फिर हर कोई अपने आप से यही सोचेगा कि चलो ठीक है, रास्ते चलने के लिए कायम किया गया, पर हम रास्ते पे चले कैसे? फिर से तारीफें आने शुरू हुई। अच्छा, चलने का मतलब ये हुआ, चलने का मतलब वो हुआ, चलने का मतलब ये वगैरह वगैरह वगैरह। Again, once we understand this, that we have to walk this path, different definitions of what it means to walk the path will come in front of us. Walking the path means to do this. Walking the path means to do that. अल्लाह का रास्ता ऐसा है कि चंद चीजें अगर आपने सामने रख दिया और उसी चीज पे आपने अमल की, तो गोया आपने अल्लाह के रास्ते पर चलने की शुरू की। The path of Allah subhanahu wa ta'ala is such that if you keep a few things in front of you and you pledge to yourself to constantly do these things, if you pledge to yourself to consistently do these things, then you will have started your path. You will have started to walk this path towards Allah subhanahu wa ta'ala.
ताला के रास्ते पर बात कर रहे हैं, इस गुफ्तगू का मकसद क्या हो सकता है? पहले हमने ये पूछना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रास्ता को कायम किया चलने के लिए, हमको इस पे चलने का मकसद क्या हो सकता है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में। You have to think to yourself first that if this path has been laid for us to walk, what does it mean for us to walk this path? What could be the purpose of walking this path? We find the answer again in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says that we have created mankind in the best of forms. अब ये आयत समात फरमाने के बाद हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने दिल पे रुजू करें, अपने ज़मीर को रुजू करें और अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या हमने वाकई सबसे बेहतरीन सूरत को अंजाम दिया अपनी जिंदगी से? Each person now, after hearing this ayat, has to ask himself, am I truly living up to this description of the Quran of me? Am I truly being the best form that Allah subhanahu wa ta'ala has created? और अगर किसी ने भी ये सवाल अपने आप से पूछ के जवाब में हाँ कहा, तो फिर यकीनन अपने आप से झूठ कह रहा होगा। If any one of us, any of you, me, anybody seated here, if we are to ask ourselves this question and we are to say yes, then definitely we are lying. Definitely we are not being truthful with ourselves. अपने आप के साथ खेल रहे हैं. We're playing games with ourselves. It cannot be. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा हर दौर में किसी न किसी अपने बंदों में से बहुत अजीज और प्यारा बंदे को कायम किया, मिसाल के तौर पे. This is why in every age of humanity, Allah subhanahu wa ta'ala has kept one of His special chosen servants in front of us, so that this person can be an example. For us, for the whole of creation, not just for all of Muslims, not just for all of people, not just for all of the world, not just for all of the universe, but for all of creation. For us, this example is first and foremost Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam. सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ एक ही कायनात के लिए नहीं, बल्कि सारे खल्क के लिए ये मिसाल मौजूदा क्या हो सकता है, वो यही है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. And around Huzur sallallahu alaihi wasallam, there are companions and there are family members that serve as further examples, who took the form, the ultimate form of humanity to its extreme. और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि गिर्द ऐसे असहाब आपको मिलेंगे, ऐसे अहले बैत आपको मिलेंगे, जिन्होंने अहसनी तक़वीम की मिसाल को अपनी एक्सट्रीम की तरफ लेके गए. They have taken this example,
that we must live up to its extreme. और इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी शान बयान फरमाया कुरान मुकद्दस में. Allah subhanahu wa ta'ala loved these examples. He loved these people and their actions so much. His love for them reached such a level that He included examples of their deeds in the Quran itself. इससे पहले कि हम कुरान मुकद्दस को देखें, चंद रिवायात पेश करता हूं जिनसे हमको पता चले कि वाकई ऐसे मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे महबूब है. Before going into some of these verses of the Quran, let's see some narrations that show us how beloved these people are to Huzur sallallahu alaihi wasallam, and how honorable and how respectable they are with Allah subhanahu wa ta'ala. روى الترمذي عن أنس قال كان عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه. سبحان الله. Imam Tirmidhi narrates from the great companion Hazrat Anas ibn Malik radiallahu anhu. One day there was a bird, a cooked bird that was brought before Huzur sallallahu alayhi wa sallam. And he made a dua. Hazrat Imam Tirmidhi, Hazrat Anas ibn Malik radiallahu anhu से रिवायत करते हैं कि एक दिन कुछ खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश किया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह आपके तेरे नजदीक सबसे बेहतरीन खल्क भेजें ताकि मैं उनके साथ खाना खाऊं. और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उर्दू की तर्जुमा में जो भी हमारी कमी है उससे दरगुजर फरमाएं. Huzur sallallahu alayhi wa sallam made this dua, O Allah, send to me the most beloved of your creatures to you to eat this bird with me. And then Hazrat Anas ibn Malik continues. What is the dua? What is the dua? Again, we'll repeat this dua for you. Ya Allah, send to me the most beloved of your creatures to eat this bird with me. Send me the one that you love the most so that he can eat this bird with me. So that he can eat this food with me. And then what does Hazrat Anas ibn Malik say? فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ. Allahu Akbar. फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु तशरीफ हाज़िर हुए और दोनों बैठ के खाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. After Huzur sallallahu alaihi wasallam made this dua, who appeared in front? Hazrat Ali karramallahu wajhahul kareem. Hazrat Ali came and they ate together. This is the example of how beloved the people of Huzur sallallahu alaihi wasallam are to him, and how beloved and respected they are in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Another very famous narration, बहुत ही मशहूर रिवायत है, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हस्ब मोहब्बत व अक़ीदत के हम फिर से आपके आगे पेश करते हैं. अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हुसैन मुझसे हैं और बेशक मैं हुसैन से हूं. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Hussein is from me and I am from Hussein. What a powerful statement for Huzur sallallahu alaihi wasallam to make. What an amazing statement. What an extreme statement. These are the extreme examples
And how are they extreme? How are they extreme? Is it just because of blood relations? Is it just because of association? ये सिर्फ नस्ब और निस्बत की वजह से है? बेशक हुजूर की नस्ब और निस्बत हमेशा रहने वाली है। ये हजरत उमर फारूक की रवायत है। बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नस्ब क़यामत के दिन टूटेगा सिवाय मेरा नस्ब। और क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did say this. Hazrat Umar narrates from Huzur sallallahu alayhi wasallam that he said, every bloodline will break on the day of judgment. On the day of Qiyamah, every bloodline will break except for mine. Except for my bloodline. So yes, this is a nasab, but is it just nasab? I'm told that the messages of this masjid that are going out to you revolve around akhlaq. मुझे कहा गया गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि अक्सर जो पैगाम आप लोगों के आगे पेश होते हैं ये अखलाक के गिर्द होते हैं, अखलाक से मुतल्लिक होते हैं। तो आइए इनके अखलाक और किरदार देखते हैं कुरान की रोशनी में। Let's look at the character of these people we're talking about in the light of the Quran. Let's go to those first few ayat that we spoke about in the beginning. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. They are fulfilling their vows and they fear a day whose evil will be continuous. हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती अपने तफसीर में बयान करते हैं, ये 3 आयतें जो सूरह दहर में हैं, इनकी मुराद, इन मिसालों से मुराद है हज़रात अहलेबैत। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती, you should know this name. This name is a part of your history. This name is a part of your culture. As people who live in the Indian subcontinent, it's very important for you to know these kinds of names. Qazi Sanaullah Panipati was a student of Mirza Mazhar Jana, and he wrote an entire commentary in the Arabic language of the Quran, and he named it after his teacher, Tafsir Mazhari. Qazi Sanaullah Panipati ne Tafsir Mazhari ki tasnif और अपने पीर मुर्शिद की मोहब्बत में इसका नाम रखा है तफसीर मज़हरी, मिर्जा मज़हर जाने जनाब के नाम से। He says that these 3 ayat of Surah Al-Dahr are speaking about Ahlebaith. What is the story behind these 3? First, I'll translate the rest of it. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا। और वो लोग खाना खिलाते हैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत के लिए, मिस्कीन को, यतीम को, असीर को। असीर का माना कैदी। इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। और ये लोग कहते हैं हम सिर्फ आपको इसलिए खिलाते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा के लिए, और हम आपसे ना कोई जज़ा मांगते हैं ना कोई शुक्रिया। They feed food purely for the love of Allah subhanahu wa ta'ala to the destitute, to the orphan, and to the prisoner. And they say, we only feed you for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't seek from you any kind of recompense or any kind of thanks. The story behind these ayat was that one day Hasanain Karimain fell ill. Hasanain Karimain are who? Hazrat Imam Hassan, Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhuma. One
one day they both fell badly ill. एक दिन हसन करीमैन को एक किस्म की बीमारी पड़ गई और वो सख्त किस्म की बीमारी थी, और बीमारी हटाने की कोशिश में हजरत अली और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नजर मांगी, मन्नत मांगी. In order to remove this sickness, Hazrat Ali and Bibi Fatima al-Zahra radiallahu ta'ala anhuma, they made a vow with Allah subhanahu wa ta'ala that if this illness is removed, we will fast a certain number of days. अगर ये बीमारी मुनकशिफ हो जाए तो फिर हम फलां दिन के लिए रोजा रखेंगे. तो बीमारी मुनकशिफ हुई, रोजा रखने लगे. रोजा तोड़ने का जब वक्त आया तो सिर्फ हल्का सा खाना मौजूद था. We have to remember that in the time of Huzur sallallahu alaihi wasallam, resources are not what they are now. We, staying in India, we live in a country where the resources are not available for everyone. That's true. But in the time of Huzur sallallahu alaihi wasallam, it was much more extreme, it was much more widespread, and it was much more difficult to procure resources than it is now. We didn't have foundations back then that were given. The first person to start this was Huzur sallallahu alaihi wasallam, en masse. Their illnesses were cured. And so they began to fast. And on the first day that they were about to finish their fast, there was a knock at the door. दरवाज़े पे आवाज़ आई, मैं मिस्कीन हूँ, कुछ खाना मिल सके, मेहरबानी होगी. जो खाना मौजूद था आगे दे दी. Someone knocked on the door and said, I am a destitute person, I don't have any food. If I could receive some food, this would be good. They gave whatever food they had. रोजा नहीं खोल पाए. चले अगले दिन का रोजा रखें. अगले दिन का जब रोजा तोड़ने का वक्त आया, फिर से खटखटाया, आवाज आया दरवाजे में. When they continued to fast for the next day, they had some other food brought in front of them. When they were about to break their fast, another knock at the door came. मैं यतीम हूँ, कुछ खाना मिल सकता है. I'm an orphan, can I receive some food? Whatever food was in front of them, they gave it. The third day, 3 दिन से मुसलसल खाना नहीं खाया जा रहा था उस घर में. तीसरा दिन जब रोजा तोड़ने का वक्त आया, फिर से आवाज आई दरवाजा पे. On the third day, after not having eaten for 3 days, when it came time to break their fast again, there was another knock at the door. मैं कैदी हूँ, कोई खाना मौजूद नहीं है मेरे पास, कुछ खाना मिल सकता. I'm a prisoner who's staying in this city. Can I receive some food? आगे से खाना दे दिया. तो तीसरा रोजा भी नहीं खोल पाया. These are the examples of the family of Huzur sallallahu alaihi wasallam. These are the examples of Panj and Pak. Subhanallah. And what does Allah subhanahu wa ta'ala say? This is the beautiful part. सबसे खूबसूरत बात यह है कि ना ही सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाकया बयान फरमाया कुरान में, बल्कि उनकी नीयत जो दिल में पोशीदा होता है, वो नीयत भी सामने रख दिया ताकि क़यामत तक लोगों को पता हो कि किस नीयत से ये चीज किया जा रहा था. The intention, something that is hidden away in your heart. It's impossible for any of you to know what my intention speaking here today is. It's impossible for me to know what your intentions are today. Allah subhanahu wa ta'ala took those intentions and put them in the Quran.
To say what? That they did this. बेशक उन्होंने 3 दिन का जो इफ्तारी थी वो आगे दे दिया, लेकिन वजह क्या था? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत। उन्होंने जन्नत के लिए नहीं की, उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए नहीं की, उन्होंने अपनी जात की बढ़ाई के लिए नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए की, सिर्फ उनकी मोहब्बत में की। This feeding was not done for desire of paradise. This feeding was not done to please other people. This feeding was not done to further their own zat, to further their own egos. No. Allah subhanahu wa ta'ala himself said this was just for him and nothing and no one else. This is the immortal example of what it means to walk the path of Allah subhanahu wa ta'ala. वक्त कम है, वरना कुरान की गुफ्तगू तो कभी रोकने वाली नहीं है। We don't have a lot of time to discuss this further, but just in these 3 ayat, you will find the best, brightest, clearest example of what it means to walk the path of Allah subhanahu wa ta'ala. इस वाक़या सुनने के बाद हर किसी को यह पता होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रास्ते पर चलने की सूरत क्या हो सकती है, उसकी एक्सट्रीम क्या है, उसकी बेहतरीन मिसाल क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको ये मिसाल दिया। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام والصلاة والسلام على سيدنا خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الشريفين الحسن والحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى العمين المطهرين من الناس حمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الأصحاب والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إياك نعبد